Good morning, everyone, and welcome back to PPS Theory Sessions. Yeah, theory sessions, but we are looking at multiple programs here so that everyone will be aware of how to write those programs and how to use all these things that we have seen in lecture part. So we were discussing control structures. We are done with that third unit, but still we are practicing more programs. And what I plan is I plan to do few more practice today also. So let's do few more practices, and today I plan to cover everything in a single program. We'll try those programs also where we will have looping structure, we'll have conditional branching structure, and everything in a single place. So that's what we plan, and in the next lecture we'll start the new unit which is based on the array. So let's go through few more programs today. Now this was the last program we had done in previous lecture, right? Which is nothing but only takes 10 numbers from user and makes sum of those numbers as well as finds the minimum and maximum. Well, there are number of ways to do this, to achieve this. You may have few some other logic also. It's possible. There's nothing like right and wrong. Once you achieve your answer, that's okay. Now, when you go for optimization, okay, when you go for optimization, you will be having a single solution. Optimization means सबसे अच्छा solution, सबसे shortest solution, the easiest one, या तो फिर low cost solution आपको चाहिए. That's those are the different criterias for optimization. So जब इस तरह से आप सोचोगे तो आपको कोई एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा जो फिट बैठेगा. Otherwise, you may have multiple solutions to achieve one so, or solve the one problem. Well, as I said, let's go for a few more practices today. So let's have a new program. Let's go for the new project. I'm not going to edit that thing. And this is again PPS lecture practice. Okay. Now let's work with numbers. Let us do one program where let's say we want to take one number from user and we want to reverse that number. So we'll be working with integer number only. So let's take one integer num, and I'm going to calculate reverse number also. Okay. So we are going to have a reverse number. So let's say rev num, rev num. That's the reverse number. Now at present we assume that we will require two variables. We will require two variables later on, so we declare it. And somehow we know that we are going to work with loop, so we will require loop control variable I for iterations. So we declare number of variables here. Later on we are going to use it. Now let us ask our user to enter a number first. So we'll print simply a message. Please enter a number for which you want to find reverse number. Okay, so that's a simple method. Now we need to scan that value. So scanf, go inside double quote the control string. We want to have an integer value, so %d, and we are going to store that number in num variable, so ampersand num. We have taken that number. Now somehow let's say you are able to reverse it, reverse the number. Then at the end what you'll do is you are going to print the answer, reversed number is, and you will print that number %d. Now where you are going to store that answer, we have rev num, rev num variable. So we will simply print that number. So this is your input, this is your output,
and in between you are going to perform something which is going to reverse it. Now we need to understand how we can reverse a number. Okay, so whenever you have something that you want to try out, okay, always go for paperwork. Try to do some paperwork, and then you will have some idea how you can achieve that thing. Step by step process you to identify what process I should do. So let's do some paperwork first. Let us try to identify what should be the process. Now, for example, if we have number 1, 2, 3, 4, okay, if this is the input number, then the final answer what we want is 4, 3, 2, and 1. Now, another example, if I take random number, let's say 346, then what we need to do here is final result will be 643. That's what we want. Now, as long as you are working with a single number, 346, this is a single number, then you need to understand first how this number has been calculated or has become. So it's nothing but 340 and a 6, right? That's what that is how this single number is prepared. You have 300, then you have a 40, and then you have 6. Maybe Gujarati students will know something like ekam dasak so and so on. I don't know who these are the decimal numbers, and all these numbers do have multiplication. So how this thing is prepared? So you can say that 6, we are working with decimal numbers, so 10 raised to 0. Here you have 4 into 10 raised to 1, and here you have 3 into 10 raised to 2. Correct? So once you have the digits 6, individually you extract all these digits 6, 4, and 3. Okay, if you can extract those digits, then you can form this number by just having 10 raised to 0, 10 raised to 1, 10 raised to 2 multiplication, and then do the summation of all, right? Then you'll have the final answer 346. Now that's how this number has been prepared. So first of all, if we want to reverse this number, then we need to have those digits extracted. Somehow, if we can extract these digits, singular digits, then we can prepare this number also, which will be 640 and 3. So it is nothing but 3 multiplied by 10 raised to 0, 4 multiplied by 10 raised to 1, and 6 multiplied by 10 raised to 2. And now, if you focus here, we are multiplying it with 10 raised to some power, correct? We multiply it with 10 raised to something, 10 raised to some power. This is power 1, this is power 2, which means 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on. The lengthiest number, having the more number of digits, this loop may go on, which means we want to multiply it with 10 to something, and that is the continuous process. So whenever we want to repeat something here, okay, whenever we want to repeat something, we always have loop. You may use for loop, while loop, do while loop, anything. So we can form a number. What we want is, first we want to extract those digits. सबसे पहले हमें ये digit निकालने होंगे. अब 346 जो है, let us talk about that process now. 346 is your number. How you can extract digits from this? Now it's easy. You have 346. Okay, you divide it by 10. Divide it by 10 and find out the remainder. So it's very easy. 346, when you divide it by 10,
will say I'll multiply 10 with 34, okay, then you'll have 340 and remainder will be 6. Now what we want remainder. So actually what we are going to do is we are going to use modulo operator here. So when I go for 346 modulo 10, when I do it is going to give me the last digit. It will give me, and when I divide my number with 10, and if I extract integer part only, then it will give me 34 here. Modulo 10 and divide 10. When you understand this process, you will be very much clear that modulo will give you the remainder, the last digit, and the division will give you the dividend. So 34. That's what we want. Now this is our first iteration. We can say this is our step number 1. From where we have 34 left. In the second step, you are going to repeat the same process. You have 34, make modulo 10, it will give you 4. And you have 34, divide it by 10, it will give you 3. Right? And you have 3 here. Now, wherever you want single digits, you found single digit 6, single digit 4. Still, we repeat this process. Let us go for the third step. Okay. And what is the current number? We have 3. Now we will repeat the same process. 3 modulo 10 will give me 3, and 3 divide 10 will give me 0 answer. Okay. Now when the division process leads to the 0, we are going to terminate our process here. When our actual number becomes 0, we will stop here. So this is my termination condition. When a number becomes 0, I am going to stop. But while I go through this process, every iteration had given me one number. Right? We had those numbers. We were having 6, we had 4, we had 3. Now simply what you do is, first time when you have 6, you multiply it by 10. It will give you 60. Okay. Now next time what we need to do is, to make this 643, it should be 600, it should be 40, and then it should be 3, and everything should be added here. Correct? So how are we going to do this thing? Now this should become 64, and before we add 3, look here what we have done. 60 plus 4, we have 64, right? And multiply your 64 with 10, so you have 640, then you add your 3 inside. So multiplication and then plus, again multiplication and then plus process. Now this process is also being repeated, correct? So now we need to think about iterations on this process also. When we are going to do it, when are we going to multiply, and when are we going to add that thing? Now here, as if you find, let's say once you have 4, whatever is there in the previous iteration, you add it.
Simple. Now this multiplication can be done in previous iteration or multiplication done in the current iteration. First you multiply and then add. You have to decide. तो ये पता चल जाएगा कि 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद करंट नंबर ऐड किया, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद करंट नंबर ऐड किया, एंड आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा. लेकिन व्हाट शुड बी द फर्स्ट प्रोसेस? जब पहली बार आपको ये नंबर मिलता है तो आप क्या करोगे? नाउ इन दिस प्लेस यू हैव टू इनिशियलाइज योर रिजल्ट with something. Correct? You have to initialize your number with something. Now here what we will do is, let's say कि भाई मेरा result जो है वो initially 0 है. My result is initially 0, and this multiplication and addition operation I'll do in the current iteration. तो मैं रिजल्ट जो है उसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, एंड देन आई एम गोइंग टू ऐड द करंट नंबर 6 इनटू दैट. नाउ 0 मल्टीप्लाई बाय 10 विल बिकम 0. 0 प्लस 6 वी विल हैव 6. तो अब पता चल गया कि इनिशियली रिजल्ट जो है वो 0 है. Now you multiply it by 10, you will have 0, and then whatever number you have plus आप 6 ऐड करोगे तो आपको मिल गया 6. तो ये हो गया आपका रिजल्ट, करंट रिजल्ट 6. देन इन द नेक्स्ट इटरेशन मल्टीप्लाई इट बाय 10, तो 60 में आपने करंट नंबर ऐड किया 4, becomes 64. Then what is your result? You have 64 result. You multiply it by 10, it becomes 640, and in your 640 you add your current iteration single digit, that becomes 643. So when we try to do this entire process, we come to know that in every iteration we have to perform these two steps: multiplication, addition, multiplication, addition, multiplication, addition. So this process is also being repeatedly done. ये कब होगा? जब एक बार आपको सिंगल डिजिट मिल जाए तब. अब सिंगल डिजिट कैसे मिलता है उसके लिए भी हमने रिपीटेटिव प्रोसेस किया. मॉड्यूलो 10 डिवाइड 10. मॉड्यूलो 10 करने से सिंगल डिजिट मिला, और डिवाइड 10 करने से नेक्स्ट इटरेशन का नंबर मिला. सो वी आर गोइंग टू डू दोस 4 प्रोसेस इन अ लूप. मॉड्यूलो 10 डिवाइड 10 करेंगे जिससे हमें एक एक डिजिट मिले, एंड मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस करंट डिजिट करेंगे जिससे हमें रिवर्स आंसर मिलता जाएगा. सो वी आर गोइंग टू परफॉर्म 4 स्टेप्स इन अ लूप. और वो लूप कब तक चलेगा? जब तक आपका और ये नंबर जो है वो 0 नहीं हो जाता. ओके, सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस. अब ये एक बार अगर आप पेज में करके समझ लोगे तो प्रोग्राम आपके लिए इजी हो जाएगा. Let us try to build this one. Okay, so we go to the program, and what are we going to do now is, अब यहाँ पे कोई बताएगा do I need loop control variable here? जो मैंने I डिक्लेयर किया था उसकी ज़रूरत है? Let me go back to this understanding. Do I need loop control variable? यहाँ पे मैंने iteration count किया. This is first iteration, second iteration, third iteration. Do I need to maintain those iterations based on count 1, 2, 3? कोई बता पाएगा whether we require that loop control variable or not? Yeah, we do not require loop control variable here. क्या आपने पहले से डिसाइड किया था कि ये इटरेशन जो है वो 3 बार ही चलेगा, 5 बार ही चलेगा, 6 बार ही चलेगा? हैव यू डिसाइडेड दैट थिंग? अगर वो डिसाइड किया हो तो आप i = 0 से i <5
या तो फिर i लेस देन 7 तक लूप चला सकते हो. Now it does not depend on predefined values, it depends on the length of your number. अगर 3 डिजिट का नंबर है तो 3 बार चलेगा, 5 डिजिट का नंबर है तो 5 बार चलेगा, एंड सो ऑन. सो योर लूप विल डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ योर नंबर. दैट्स व्हाई वी एक्चुअली नीड नॉट टू हैव दिस आई. हमें आई की कोई जरूरत नहीं है. विल टेक अ नंबर, ये जो नंबर यूजर के पास से लिया है वो नंबर इटसेल्फ जब तक 0 नहीं हो जाता, ओके, तब तक हम ये प्रोसेस रिपीट करेंगे. तो अब यहाँ पे फोर लूप यूज करने के अलावा वाइल लूप अच्छा रहेगा. वाइल लूप वी आर गोइंग टू यूज हियर. अब वाइल क्यों? क्योंकि वाइल एंट्री कंट्रोल लूप है. हम पहले से ही चेक कर सकते हैं कि जब तक नंबर ग्रेटर देन 0 है तब तक मुझे ये लूप चलानी है. जब नंबर 0 हो जाएगा आई विल ब्रेक दिस लूप. वन मोर थिंग, do not use do while here. do while यूज मत करना, क्योंकि do while एग्जिट कंट्रोल लूप है, वो एक बार तो 100% चलेगा. व्हाट इफ यूजर ने पहले ही 0 दे दिया आपको? अगर नंबर ऑलरेडी 0 है तो हमें एक भी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू यूज do while loop here. Yeah, so we make use of while loop. अब आपको पता चलेगा कि while और for दोनों एक तरह से काम करते हैं, लेकिन कभी कभी while लूप अच्छी रहती है, कभी कभी for लूप. जब आपके पास आपको पहले से पता है कि मुझे ये लूप इतनी बार चलानी है, तो for लूप आपको इजी लगेगी. बट व्हेन यू आर नॉट श्योर कि आपकी लूप कितनी बार चलेगी, तो आपके लिए while लूप अच्छा रहेगा. नाउ दिस इज वन एग्जांपल ओनली. इट्स नॉट थिंग कि भाई आप ये वाइल लूप से ही करो, आप ये फोर से भी कर सकते हो, लेकिन वाइल इजी रहेगा. सो लेट्स से वाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0, आई एम गोइंग टू परफॉर्म 4 स्टेप्स. इफ यू रिमेंबर, क्या क्या करना है हमें? वी हैव टू गो फॉर मॉड्यूलो ऑपरेटर, वी हैव टू गो फॉर डिवीजन ऑपरेटर, वी हैव टू मल्टीप्लाई, एंड वी हैव टू सम. Okay, so now when I do modulo operation, num modulo 10 जब मैं करूंगा तो वो मुझे एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करके देगा, करंट डिजिट. Now to store that current digit we will require one variable here. Okay, so let's call it digit. Okay, I mean it is actually a single digit extracted from the number. तो ये मॉड्यूलो ऑपरेटर हमें जो एक लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करके देता है, हम उसको यहाँ पे स्टोर करेंगे. So we will extract one digit, and then what we will do is we will update our number itself. जो नंबर यूजर ने दिया हम उसी नंबर को अपडेट कर देंगे by just dividing it to 10 with 10. So हमने पहले एक डिजिट एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसके बाद वो नंबर को डिवाइड बाय 10 करके अपडेट कर दिया. So we are done with that part. Now if you remember, जो हमारा रिवर्स नंबर है हमें उसको क्या करना है? इनिशियलाइज इट विद 0 फर्स्ट. पहले 0 से इनिशियलाइज करो, तो आप क्या कर सकोगे? रेव नम जो है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें आप करंट डिजिट को ऐड कर पाओगे. Multiply by 10 and add the current digit. Now both these operations I'm doing in a single line. Okay, so that's the next process we want to do. अब ये फाइनल आंसर कहाँ पे जाएगा? We are going to store it in our current reverse number answer. फिर से हम उसी को वहीं पे स्टोर कर देंगे. So current reverse number जो है 0, 10 से मल्टीप्लाई करो, 0 का 0 रहेगा, प्लस पहला डिजिट उसमें ऐड करो. सो 0 + 6, अब रिवर्स नंबर हो गया 6. नेक्स्ट इटरेशन में जब आओगे तो रिवर्स नंबर आपका 6 है, मल्टीप्लाई इट बाय 10, सो इट बिकम्स 60, प्लस
करंट डिजिट आपका होगा 4, सो 60 + 4 becomes 64 here. थर्ड टाइम जब आओगे तो 64 मल्टीप्लाई बाय 10 becomes 640 और करंट डिजिट उसमें 3 ऐड हो जाएगा, दिस becomes 643 and at that time 3 divided by 10 will be 0. So next iteration condition will become false. आप लूप से बाहर आके रिवर्स नंबर प्रिंट करोगे. So this is the logic behind finding a reverse number. Okay, let us try it out. Run करते हैं, देखते हैं क्या होता है. So well, we have started a new project, so let me select language first and let me save this also. This is PPS Unit 3 Program 3. So let's run this now. So it asks us to enter a number. Let me give the same 643 or 346. Let me give 346 number and the reverse answer will be 643, right? Look, if you want to trace this thing or if you want to see how everything happens, right, then within this entire process, you can print all those things. You can print all those things. So at this place, let's say, let us have a number of printf statements. So in every iteration, I want to see what happens. So this is ITR, okay, and iteration 1, 2, 3. अब उसके लिए count चाहिए होगा. So let's not have it. Let us simply go for single digit. What is my digit I want to see? So %D, and I'm going to print digit here. Then let us have a look at /n, or let's not do /n/t. एक tab छोड़ता हूँ and my updated number. So %D, and let us print num. And we also want to have a look at our current reverse number. So /t reverse, it's going to be %D, and let us have rev num. Okay, so what we do is when we go for these calculations, simultaneously we print those things. अब ये 3 बार लूप चलेगा तो ये 3 बार प्रिंट होगा, remember. So every time I'm going to have a new line, और वो नई लाइन में ये तीनों वैल्यू को मैं प्रिंट करूंगा with tab. So let us run this loop now, and let me give the same value here, 346. So you have 346, पहले सिंगल डिजिट एक्सट्रैक्ट हुआ 6 और आपका नंबर बन गया 34 और करंट रिवर्स आपके पास है 6. द नेक्स्ट इटरेशन में ये जो 34 था उसमें से 4 एक्सट्रैक्ट किया, आपका नंबर बचा 3 और करंट रिवर्स 6 मल्टीप्लाई बाय 10 60 प्लस 4 64 हो गया, राइट. एंड देन ऑन द थर्ड इटरेशन यू हैव एक्सट्रैक्टेड 3 एक्सट्रैक्ट कर लिया तो बचा 0 और 64 मल्टीप्लाई बाय 10 640 प्लस 3 you have 643 answer. And then current number is 0, तो ये while loop false हो जाएगा. So उसने बाहर जाके आपका final answer print कर दिया. So you can have /n here so that your final answer will be printed in the new line also. So you can even trace your current iteration. आपको पता चलेगा कि loop के अंदर actual में calculation क्या होता है. Now, when you are working with some kind of a complex program right now, this is better to print. आप print करो इसे और जब आपको final answer मिल जाए तो आपको सिर्फ ये extra printf जो है वो निकाल देना है.
just comment it out, just comment it out so that आउटपुट में वो नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप ट्राई कर रहे थे, when you had gone for trial and error, it will print all the iteration intermediate values. Okay. Yeah. What if we enter a decimal value? Well, this simple logic will not work with float numbers, क्योंकि float number में क्या होगा, before decimal point आपका decimal number है, after decimal point you have a fractional number, तो वो exactly reverse नहीं हो पाएगा इस तरह से, and that you need to go for a different logic. You have to find out a logic first and then you have to implement that thing here. Okay. Yeah. Let me see if there are any other queries. Till the main number is higher than 0. Yes, that's correct, Subham. Yeah, we don't, that point was actually, we are running this loop till the main number is greater than 0, and in every iteration we are updating the main number itself. That's why we can say till the main number is greater than 0. Well, so those were the queries, and this is what the reverse number program is. And we have seen this using while loop. Now let me tell you, you can also achieve this thing using for also. हम इसको for loop से भी कर सकते हैं. No change in my logic, remember. Okay, no change in this logic. लेकिन for loop की syntax क्या है? You have to initialize your loop control variable, comma, you should have one condition here, comma, you should have increment or decrement condition. Now this is what the syntax of for loop is. But remember, we haven't discussed this thing earlier. मैंने ये आपको पहले नहीं बताया था, लेकिन आप ध्यान से सुनो. For loop के अंदर ये जो 3 स्टेटमेंट हम लिखते हैं, ये तीनों ऑप्शनल हैं. It is not compulsory to write these 3 things. It is optional. अगर आपको नहीं लिखना है, मत लिखो. आप इनिशियलाइजेशन नहीं लिखना चाहते, मत लिखो. सेमीकोलन होना चाहिए so that it can differentiate those 3 statements. So मुझे इनिशियलाइज नहीं करना है, बिकॉज मैं ये लूप को कंट्रोल करूंगा इस नंबर से. ये नंबर जो है वो यूजर देगा, तो इनिशियलाइज तो हो गया, मुझे ये इनिशियलाइज नहीं करना. आई ऑल्सो डोंट वांट टू इंक्रीज और डिक्रीज दैट नंबर हियर. मुझे यहाँ पे उसको इंक्रीज या डिक्रीज भी नहीं करना, क्योंकि लूप के अंदर मैंने उसको अपडेट कर लिया. So last increase decrease भी मैंने निकाल दिया. I don't want to do that thing also at this place. I have done it in other place. So for loop के लिए जो initialization part है वो हमने user से ले लिया, तो यहाँ से निकाल दिया. For loop के अंदर increment या decrement वाला जो part है वो हमने loop के अंदर कर दिया, इस वजह से मैंने यहाँ से निकाल दिया. Now we must have a condition. अगर condition नहीं लिखूंगा, अगर इसको भी हटा दूंगा, तो ये infinite loop हो जाएगा. We can have infinite loop, तो फिर loop के अंदर कहीं ना कहीं आपको break करना पड़ेगा. अगर ऐसा करते हो तो ये for loop ऐसा दिखेगा आपको. All those things are optional. But let's write condition here. अब क्या condition था? When number is greater than 0, I'm going to perform this thing. Now this will also work. If I save and if I execute this thing, then it is still going to work and will give me the answer. बीच वाले printf मैंने comment किए हैं, so we don't have that printing part, but the answer is correct, right? So still this works. And यहाँ से आपको ये देखना है कि for loop की syntax में जो आपको 3 statement मिलते हैं, all those 3 statements are optional. It is not mandatory. If you want to omit something, you can. And this is the example. अगर आप while की जगह पे for use करना चाहते हो तो कर सकते हो. But as I said, this will look something complex.
आपको ये जल्दी समझ में नहीं आएगा, ये आगे पीछे सेमीकोलन है, इनिशियलाइजेशन तो है ही नहीं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी है ही नहीं, सो हाउ इज इट गोइंग टू वर्क? इट इज समवॉट कॉम्प्लेक्स, और उसकी जगह पे आपको ये while लूप इजी दिखेगा, only the condition. So both are correct, whatever you want to use. आपको जो comfortable लगता है आप use कर सकते हो. Yeah, so that was the reversing a number. और as I said, हर बार जैसे ही आपको कोई एक प्रॉब्लम मिलता है, try to understand that problem first, make use of pen and paper, and try to solve that problem on a पेपर फर्स्ट. पेपर पे जब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मुझे कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं. पहले ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, एंड सो ऑन. नाउ व्हेन यू आर क्लियर विद दोज स्टेप्स, एक तरह से आपको एल्गोरिदम मिल गया, ग्राफिकली दिखा दो तो फ्लो चार्ट मिल गया. एंड व्हेन यू फॉलो दैट एल्गोरिदम इन अ प्रोग्राम, तो जो एल्गोरिदम के स्टेप हैं उसी स्टेप्स को आप सी सिंटेक्स, सी लैंग्वेज की सिंटेक्स में लिखोगे, आपका प्रोग्राम बन जाएगा. करेक्ट? सो that's one more example of doing this thing, right? Let's have one more thing. Again, I'll go for the new project. Okay, and let me save initially PPS. This is unit 3 and this is fourth practical program. Now very quickly I want to show you the other triangle program. We are going to use multiple for loops, so loop control variables we will require I, and when you go for loop control variables I, and if you need another loop control variable, generally we go for J, and if you require a third one we may go for K, I, J, K, and so on. Okay, and here what we want is, we first let us try to have upper left triangular matrix very quickly. Okay, and right now I'm simply going to print star there, so a single star and a space, and let us ask user how many rows user requires. So that will be the number of rows n. So very quickly let us ask user to enter number of rows. Okay, and let us scan that value, scanf, and %d ampersand n, so that when I'm writing my outer loop decides number of rows. तो इसको मैं I equals to 0 से लेके I less than n तक चला सकता हूँ. तो now user will decide उसको कितनी रो चाहिए, 4 रो चाहिए, 5 रो चाहिए, 6 रो चाहिए, कितनी रोज चाहिए. And then we want to have a triangle, so rows and columns, we need to go for another for loop here, which will actually print this star, and after we complete one row, entirely one row, we will create a new line. So we'll have /n at this place. Correct? Now upper left triangular matrix, so J will start from 0, and अगर मैं 0 से start करता हूँ, then I'll go for J++ always, but condition क्या रहेगी, J is going to depend on I, और पहली बार जब मैं प्रिंट करूंगा फर्स्ट रो में 5 स्टार, दूसरी रो में 4 स्टार, तीसरी रो में 3 स्टार, एंड सो ऑन. आई एम गोइंग टू डिक्रीज इट. अब फर्स्ट रो में 5 स्टार या 4 स्टार क्यों? बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज आई रिक्वायर, सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन n. तो j जो है, j की वैल्यू जब तक n और i पे डिपेंड करती है, and this is going to be minus n minus. So when I is 0 and n is 5, this becomes 5 minus 0, 5. So when j is less than 5,
it is going to print it. So now this will give us upper left triangular matrix depending on n, the input given by user. Let us quickly run this thing. अगर मुझे 5 रो चाहिए then I'll say 5 और उसने मुझे 5 रो दे दी और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बना दिया. Now you know that कि अगर आपको लोअर राइट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स चाहिए तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको स्पेस देनी पड़ेगी. जहाँ पे अभी आपके पास स्टार है वहाँ पे आपको स्पेस रखनी पड़ेगी. So instead of this star you want to have space, and before you make a new line you want to have a right triangle. फिर से 0 से लेके j++ यहाँ पे आप स्टार प्रिंट कर सकते हो. Okay, at this place you can print a star, and now it will depend on only I, not n. 0 से लेके equals to I तक रन करूंगा. ठीक है. सो पहला लूप जो करंटली स्टार है वहाँ पे स्पेस आ जाएगी, और दूसरा लूप जो ये नेक्स्ट हाफ वाला पार्ट है लोअर राइट वहाँ पे स्टार प्रिंट कर देगा. लेट अस क्विकली रन दिस. सेम, आई वांट 5 rows and I have that lower right triangular matrix. बट अब आप देखोगे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस आ गया, राइट. We have this in the 5th line, we have 5 stars, but before those 5 stars I have extra space because I run this for n minus I times. अब उसको कम करने के लिए let us decrease one more value here. So पहली बार उसने जो 5 स्पेस रखी उसके बजाय वो 4 स्पेस रखेगा, and so on. So now if I run this code, give the same input 5, तो वो एक्स्ट्रा स्पेस नहीं दिखेगी आगे. करेक्ट. सो वी हैव दिस थिंग. अब मान लो कि स्टिल इसके राइट में भी आपको एक छोटा ट्रायंगल चाहिए यहाँ पे. ओके, सो वी कैन हैव वन मोर फॉर लूप बिफोर वी मेक अ न्यू लाइन. बिफोर वी मेक अ न्यू लाइन हमको फिर से एक लूप चाहिए. नाउ दैट लूप विल डिपेंड ऑन व्हाट. किस पे डिपेंड करेगा. पहली लाइन में मुझे एक भी स्टार नहीं चाहिए. दूसरी लाइन में 2 स्टार तो ऑलरेडी प्रिंट हो चुके हैं. अब मुझे एक और स्टार चाहिए यहाँ पे. सो सेकंड लाइन में 1 स्टार, तीसरी लाइन में 2 स्टार, फोर्थ लाइन में 3 स्टार. सो इट और अगेन इट डिपेंड्स ऑन द आई. सो वो आई पे ही डिपेंड करेगा. लेकिन लेट अस ट्राई. अगर मैं ये इक्वल टू निकाल दूं तो क्या होगा. 0 लेस देन 0 पहली बार नहीं चलेगा. 0 लेस देन 1 एक बार चलेगा, तो दूसरी लाइन में वो 1 स्टार प्रिंट करेगा. सो let us see, and we have it. Look, when you try and when you go for trial and error, okay, you will have this kind of results, and you will found new ways to do this thing. Okay, so some of you have अगर हम for loop में num का पहला ना करा तो well, Hussein, I don't understand your query. Please rewrite your query. What do you want to ask actually, Hussein? Yeah, Vyom is asking, how do you frame logic so fast? Well, that it is nothing but a practice, Vyom. When you practice more and more, your mind will think in that direction. और हर बार मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ, to improve your logic, always go for puzzles. To improve your logic, go for puzzle solve करते रहो. जितने ज़्यादा puzzle solve करोगे आपका mind sharp होगा. Your mind will think in that direction, and you'll have very quick results or quick thoughts how you can achieve. At present, it does not matter whether it is correct or not. At least you try it.
आपको जो दिमाग में आता है वो एक बार ट्राई करके देखो, अगर वो सही है तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा, अगर सही नहीं है देन इवन यू विल लर्न समथिंग कि अच्छा ऐसे करने से कुछ ऐसा हो जाएगा, तो दूसरी बार वो ट्राई नहीं करोगे आप. ओके. Yeah, back to Hussein's question. I mean, what if don't write semicolon before num in loop? Yeah, for loop में मैंने बताया कि तीनों स्टेटमेंट ऑप्शनल है. अगर वो सेमीकोलन आप नहीं करोगे तो फॉर लूप को तीन स्टेटमेंट नहीं मिलेंगे, बिकॉज दिस सेमीकोलन एक्चुअली डिफरेंशिएट्स दोज थ्री स्टेटमेंट्स. इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन किया तो उसने वो डिफरेंशिएट किया, उसके बाद आपके पास कंडीशन, कंडीशन के बाद अगेन सेमीकोलन किया तो वो डिफरेंशिएट करके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देगा. दैट्स व्हाई सेमीकोलन इज इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी. अगर आप सेमीकोलन हटा देते हो तो फॉर लूप की सिंटैक्स मैच नहीं होगी. इफ यू रिमूव दैट सेमीकोलन तो फॉर लूप की सिंटैक्स मैच नहीं होगी और वहां पे आपको कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा. सो दैट्स व्हाट will happen, Hussein. Okay. Yeah. Subham is asking, what if we want to reverse a string? Uh, to understand the string, first we need to understand array, because string जो है वो एक से ज़्यादा character मिला के बनता है. We do not have string data type in C, तो हमें character array लेना पड़ेगा. तो string को रिवर्स करने का लॉजिक जो है वो हम पहले array पढ़ेंगे, उसके बाद पता चलेगा. Okay. Yeah, so this is it. Still we have a few minutes, so very quickly I want to show you one more program where you can combine everything: for loop, switch case, while loop, ask user to enter a choice and do something, right? That's what we want to do here. And again, very quickly, let me have a new code. Okay, and I'm going to save this with PPS unit 3 fifth program, whatever. Let's say we want user to add two numbers, num1 and num2, and I want to have multiplication, division, summation, subtraction on all those things. So I can have let's say addition, subtraction and multiplication in integer, but I need to go for division in a float, right? So these are my variable declarations. We will see if other variables will be required, we'll declare it later, but let us ask user first to have those two numbers. Enter number 1 and we scan that number, %d and ampersand num1. Now दूसरा नंबर भी मैं इसी तरह से ले लूंगा. So I'll store it in number num2. And now if I want to perform those operations, I can very easily do that thing. Add equals to num1 plus num2. Okay. Sub equals to num1 minus num2. Then multiplication equals to num1 multiplied by num2. And division equals to num1 divided by num2. But both these numbers are integer, तो फाइनल आंसर भी इंटीजर में होगा, भले ही आपका वेरिएबल फ्लोट है. मुझे ये कैलकुलेशन फ्लोट में करना है, सो आई गो फॉर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग. नंबर 1 को मैंने एक्सप्लिसिटली फ्लोट में टाइप कास्ट किया. सो अब ये कैलकुलेशन फ्लोट में होगा और फाइनल आंसर भी फ्लोट में मिलेगा. And then we can print those answers also. So let me print it very quickly. Addition %d
वो मुझे मिलेगा ADD से. So I can print those things and this is going to be subtraction and the variable is sub, and this is going to be multiplication and the variable is mul, and similarly this is to be division and the variable is divi. So this program is okay till now. If I run this program, it is going to give me all those 4 answers. Well, something is wrong. What it says, format %d expected. Yeah, that's with the div. Now div is a float, and I'm printing it in this integer. So this is just a warning. My program has started. Okay, my program has already started. This is just a warning here. It says div is a float, and you print d, which means you print integer. Let us correct it out. So I'm going to print that in a float, %f, and that's why. Let's run it. Yeah, we can use %.2f. So that is just a formatting. So number 1 is 3, number 2 is 4. Then it gives me all 4 answers. Let us have a new line, but need to have a new line because very quickly I'm going to now go for a switch case. I will ask user कि ये चारों calculation एक साथ नहीं, आपको क्या करना है. So now let us have options for user. Printf, and I'm going to have option here. Please enter your choice. Let's say, let us print all those options. Say 1 for addition, and likewise I'm going to have 4 options here. Every time we'll go for, let's say, a new line, 1 for addition, and new line, 2 for subtraction, then for multiplication, /n3, and this will be for division, /n4. So मैंने ये 4 options print कर दिए और user से एक choice मांग ली. Now let us have one more variable here, choice, integer ch. That's my choice. So let us scan that value, scanf, and %d and %ch. अब ये choice ले लिया, then we can go for switch case. Okay, आप कहाँ पे ch पे आप switch case लगाओगे, and यहाँ आपके पास अब हो जाएंगे number of cases. अगर वो 1 है तो ऐड करना है, तो ये ऐड वाला जो लॉजिक है आप उठा के केस 1 में डाल दो. तो this one, then you'll say case 2. So ये subtraction वाला जो लॉजिक है वो आप केस 2 में डाल दोगे, and you'll have one more case 3. आप multiplication डाल दोगे उसके अंदर, because now we are performing those operations based on the user's choice. Okay, and you'll have case 4. You'll enter it in the case 4 here, and here you can have a default also. So you can go for a simple message, printf invalid choice. So what we have done now, we have asked user to enter a choice. अब चारों के चारों ऐसा परफॉर्म नहीं होंगे, यूजर जो बोलेगा वही परफॉर्म होगा. So if I save and run thing, then it will ask number 1 is 3, let's say number 2 is 4, और मुझे क्या करना है, I want
to multiply. So अगर ऑप्शन दिया 3, then it will print the answer multiplication 12. एक ही परफॉर्म किया. यूजर को ये रिपीट करना है तो क्या करोगे आप? What if user wants to repeat? नंबर लेने से लेके ऑप्शन लेके आंसर प्रिंट करने का जो कोड है, ये पूरा कोड आपको रिपीट करना है. तो ये पूरा कोड आप एक लूप के अंदर डाल दोगे. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. एक लूप, अब लूप कोई भी हो सकता है, व्हाइल लूप, डू व्हाइल, फॉर लूप, जो भी करो आप व्हाइल डालते हो तो कंडीशन क्या रहेगी? अब आप ये कर सकते, ये कोड आप 5 रन करना है तो आप एक लूप कंट्रोल वेरिएबल लेके वेरिएबल लेस देन 5 तक रन कर दो, वो चलेगा. लेकिन आप ये बोलो कि फिक्स 5 नहीं, लेट यूजर डिसाइड. अगर यूजर को चाहिए तो रन करे, यूजर को नहीं चाहिए तो वो स्टॉप कर दे. सो फॉर दैट you have to ask user, do you want to continue? पूछोगे, do you want to continue? And in that case, let me go for do while loop. So do, एक बार तो मैं 100% run करूँगा. But here in the exit, I will check what user has said. अब user को yes or no देना पड़ेगा, तो let us have one character variable here, and that is something, let's say repeat. Okay. And we are going to ask user, एक बार फाइनल आंसर मिल जाने के बाद हम यूजर से पूछेंगे printf do you want to continue, और यूजर को बोलेंगे y या तो फिर n एंटर करो और हम उसको स्कैन करेंगे. %c कैरेक्टर स्कैन किया, कहाँ पे? rep वेरिएबल में. सो लेट अस हैव rep. सो अब मैं ये rep को चेक करूंगा. rep, जब तक rep इज इक्वल्स टू सिंगल कैरेक्टर तब तक मैं ये लूप चलाऊंगा. जैसे ही यूजर y के अलावा भी देगा तो मैं ये स्टॉप कर दूंगा. Now this is how you can achieve. I know that time is over, but let us run this code once, okay, and see. So when I run, it is going to ask me, yeah, character pointer. Yeah, I forgot to have ampersand. Scanf में ampersand आएगा. Don't forget to do that thing. Okay, so save and let us run this code now. So first time number 1 is 3, number 2 is 4. मुझे add करना है, option 1. So add 7 मिल गया, and then it asks me, do you want to continue? अब यहाँ पे उसने मेरे पास से एक कैरेक्टर लेना चाहिए था, लेकिन उसने वेट नहीं किया. So this depends on some compilers. Turbo C में ये ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं होगा, बट कुछ अदर कंपाइलर्स, ऑनलाइन कंपाइलर्स में आपको ये प्रॉब्लम होगा कि कुछ बार वो एक कैरेक्टर लेने के लिए रुकेगा नहीं. नाउ बिकॉज वो बफर मेमोरी से कोई कैरेक्टर उठा के आगे बढ़ जाएगा. दैट्स द रीजन. द प्रॉब्लम इज आप बफर मेमोरी क्लियर कर सकते हो फ्लश करके, या तो फिर आप scanf के बजाय कोई गेट केयर यूज कर सकते हो. Now then it will take that character, and based on the character value it will run this loop again. So that's all. वो try करो lab में, कभी मैं दिखा दूंगा how to solve that problem. Okay, so that's it. Thank you for being part of this session here, and see you in the next lecture now. Thank you everyone.